Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 13th of October. Through this video session, I'll make you understand some of the important news and editorial that would be relevant for the examination. We'll deep down to the news and understand the important triviality that is relevant from the examination context. और इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जिन एस्पिरेंट ने बेसिकली दोज हु विल बी अपेयरिंग फॉर 2024 ये ज़रूरी है कि आप अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेवल को एक कांस्टेंट लेवल पे रखें. मेंटेन पंचुअलिटी, मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ आंसर राइटिंग, प्रैक्टिसिंग अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. और इस चंद प्रिपरेशंस में किसी भी तरह की आपको दिक्कतें हों, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you, right? So it is very important to maintain the consistency and even the writing practice for this examination, right? So these are some of the basics that you should be aware of, and you should be equally motivated every day to prepare with full zest and potential. Now through this video session, that is a daily news and editorial analysis, first I'll be giving you the glimpses of the news and the highlights that I'll be discussing. We'll follow the discussion post to that. So let's get see the important news and the part of the highlights for today. The first important news is all about the India's ranking in terms of the hunger index, which has been dropped. We'll see the details to this as well. The second important news talks about the tea industries, which is witnessing a financial crisis. The third important news talks about the G20 panel for the multi-development banks. The second last news, that is IIP index, that was high for the month of August. This is highest in the 14th month. And we'll conclude the session with the editorial that talks about all our parliamentary. This is basically with regards to the P20 summit that will be there in India, which actually I've started from yesterday onwards. So this is all on today's discussion agenda. Let's get straight forward to the part of the detailed discussion. So the first news is about the Global Hunger Index, GHI, commonly known as GHI. GHI index release की गई है. This is for 2023, and some astonishing fact coming out from the India's ranking. India की ranking 111 ranking है, जो कि 125 countries में, which is again a poor ranking for a country like India, जहाँ पे National Food Security Act already applicable है और गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट एक्सपेंडिचर्स भी रखी हैं. डिस्पाइट दैट फैक्ट द रैंकिंग रेट इंडिया एट 111, राइट? सो विल सी वेयर द प्रॉब्लम इज एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टैंड टू दिस रेटिंग. सो फाइंडिंग की अगर बात करें तो फाइंडिंग कम अक्रॉस डिफरेंट डोमेन एंड वर्टिकल्स. सो GHI की बात करें, द ग्लोबल पार्ट दैट इज देयर, चाइल्ड स्टनिंग की जो रेट है इंडिया की, दैट इज 33.5. ये जो डेटा है वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, स्पेसिफिकली फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में. यू कैन यूज़ दिस डेटा फॉर चाइल्ड स्टनिंग. इंडिया इज़ एट 35.4%. अगर अंडर न्यूट्रिशंस की बात करें, द कंट्री स्टूड अप एट 16.6%. देन अंडर 5 year mortality, दिस इज 3.1. चाइल्ड वेस्टिंग, दिस इज 18.7, राइट? और ओवरऑल बात करें अगर इंडिया के परफॉर्मेंस की, the number that we have got is 28.7 out of the index, and the level of hunger has been described as serious. So this is something again important. जो इंडिया की हंगर है वो सीरियस कंसर्न के तौर पे GHI के इंडेक्स में रिपोर्ट की गई है. Now a brief about the GHI index, because whenever there's an index there's a report, it become relevant for prelims examination. चाहे वो इंडेक्स की बात हो, इंडेक्स हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC प्रीलिम्स, और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं जिस इंस्टीट्यूशन से रिलीज होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मेनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो. नाउ GHI की बात करें, इट हैज़ अ कम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म जहाँ पे मेजर की जाती है स्पेसिफिकली हंगर एट द ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल एंड नेशनल लेवल. सो देयर आर 3-tier mechanism upon which the entire ranking take place. Now, South Asia और साउथ अफ्रीका कंट्रीज, सब सहारन कंट्रीज की अगर बात करें, दे आर विटनेसिंग द हाईएस्ट हंगर. ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे हंगर सबसे ज़्यादा विटनेस की गई है, एंड द शेयर द डुओ GHI इंडेक्स विद 27 ईच. और इंडिया की रैंकिंग 107 थी. इंडियाज रैंकिंग वाज 107 इन 2022, बट एट प्रेजेंट आर रैंकिंग इज 111. आई मीन जितनी ज़्यादा रैंकिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस मानी जाएगी, राइट? So this is something which
definitely India need to take concern for. Now, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जीएचआई के कंपोजिशन में? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. तीन डायमेंशंस हैं और चार इंडिकेटर्स हैं. व्हाट आर द थ्री डायमेंशन? द फर्स्ट डायमेंशन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, देन द सेकंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, और थर्ड इंपॉर्टेंट डायमेंशन है दैट इज इनएडिक्वेट फूड सप्लाई. अब इस ये तीन डायमेंशंस है, चार इंडिकेटर्स की अगर बात करें, द फर्स्ट इंडिकेटर दैट इज ए, this is under nourishment. The second indicator, or you can say the dimension, this is actually the dimension. The second dimension is under 5 mortality rate. The third dimension is stunning, and the fourth dimension is wasting, right? तो ये कुछ important factual information है जो आपके prelims के लिए काफ़ी ज़्यादा relevant है. A question can be directly asked in the examination. Either you can take screenshot for the revision purposes. और बात करें नेबरिंग कंट्रीज की परफॉर्मेंस की, दे आर द लिस्ट एंड द रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज. इफ यू लुक एट द नेबरिंग कंट्रीज, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग विद पाकिस्तान, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया से अच्छी रही है. उनकी रैंकिंग है 102. दिस इज फॉर पाकिस्तान. बांग्लादेश इज 81 एट द रैंकिंग, नेपाल 69 एंड श्रीलंका एट 60th पोजिशन. तो ये रैंकिंग है हमारे नेबरिंग कंट्रीज की. नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द ranking of the top 5 countries which has performed in the GHI index. So top 5 countries कौन से हैं? The first country is Belarus, right? Then we have Estonia, Chile, China, Victoria, Estonia, Georgia, Hungary, Kuwait and Latvia. तो ये कुछ countries हैं जिनकी top performance रही है इस ranking में, right? Now moving ahead with the center state, basically GHI की जो report है उसको outstandingly government of India ने reject किया है. And the statement that is coming from the Ministry of Women and Child Development, they have categorically said that the report or the index suffer from serious methodological issues, shows the malafide intent. See, I mean, this is a part of the government defense also, will be neutral. But to a larger extent, जो methodology है वो बहुत सारे parameters पे check की जाती है. There are certain parameters which is actually being checked upon. तो government को देखना होगा कि क्या वो वहाँ पे improve कर सकते हैं या things that can be worked upon. The report is prepared and released by the Irish NGO worldwide and the German NGO that is World Hunger. तो ये कुछ important चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. Prelims point of view से ये काफ़ी ज़्यादा relevant है. Now moving ahead with the other news, Indian tea industry experiencing the part of acute financial crisis. Tea industry, which is the largest industry in India, अगर बात करें दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, बट कंसर्न यहाँ पे ITA ने रेज किया, दैट इज इंडियन टी एसोसिएशन. दे हैव सेड दैट द इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस विद प्राइस नॉट कीपिंग द पेस विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस. जिस तरह से प्रोडक्शंस हैं बढ़ रही हैं या फिर बात करें मिसमैच भी है सप्लाई में, उस तरह से प्राइजेस एक्चुअल में फार्मर्स को नहीं मिल पा रही है. सो दिस इज क्रिएटिंग अ मिसमैच सप्लाई एंड द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शंस एंड सप्लाई बैलेंसेस, राइट? So what are the details coming from this particular industry, that is the tea industry? Tea Association ने specifically एक report release की है and they have noted that 4% of the increase, the annual increase is there in the past years. 4% की increase देखी गई है tea industry में. This is specifically with regards to the tea industries or the tea sector. And in contrast, there's a vital input that the coal has grew with higher rate than 9 to 15% in the same period. तो जहाँ पे एक सेक्टर 9 से 15% की परफॉर्मेंस कर रही है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कोल. तो टी इंडस्ट्री इज ओनली मेकिंग अ 4% ऑफ द ग्रोथ, राइट? सो राइजिंग इन द टी डिमांड, इवन ग्रोवर्स की अगर बात करें, मार्केट सप्लाई मिसमैच, द डोमेस्टिक कंजम्पशंस एंड एक्सपोर्ट hasn't been paced with the increase. जिस तरह से increase बढ़ी है, I mean the productions, specifically talking about the productions which is there, the export has actually declined. And during the current financial year, India की जो tea production associations है, they have witnessed a significant decline in the tea price compared to 2022. जो 2022 में पिछले साल की जो prices थी, वो इस साल के prices में काफ़ी ज़्यादा decline witness की गई है. Now, what is there in the drop? अगर export की बात करें, the export scenario remain grim. The situation which is uncertain in terms of payment, specifically Iran में सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं. और टी की बात करेगा स्पेसिफिकली, आई टेल यू, गिव यू द मैप सो दैट पिक्चर, तो यहाँ पे आप क्लियर कर पाएंगे कौन कौन से हैं. ईरान मार्केट कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द टी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया.
और अगर मिटिगेशंस की बात करें, इंडस्ट्रीज को आरओटीडीएम के साथ जो रिमिशन और ड्यूटीज ऑन टैक्सेस है उस पर इंसेंटिव देने की जरूरत है, ताकि एक बेसिकली दार्जिलिंग टीज और भी कुछ स्पेसिफिक स्टेट वेरिएंट के जो टीज है, स्टेट वेरिएंट टीज विच आर देयर, विच इज आसाम के अलावे, आसाम इज अ प्लेस, आसाम के अलावे मुन्नार इन साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु में, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे भी स्पेसिफिक वेरिएंट एक्चुअल में यूज़ किए जाते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। Now, अगर डेटा देखें व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द टी इंडस्ट्रीज और किस किस कंट्रीज में क्या एक्सपोर्ट हुई है। सो द फर्स्ट गोज टू ईरान, एज ऑफ टू ईरान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। देन वी हैव रशिया, United States of America, United Arab of Emirates, United Kingdom, Germany, Iraq, Netherlands and the Japan and Poland. तो ईरान में सबसे ज़्यादा और सबसे कम पोलैंड में इंडिया एक्सपोर्ट करती है। बट द वैल्यू विच इज देयर, I mean the value which is the desired value which is required is not being. Now, moving ahead, G20 the multi development banks हैं, उनमें suggestions दी गई हैं by the panel that they should look forward for the project based approach, और इससे शिफ्ट करने की जरूरत है, एक नई इनोवेशन अप्रोच के साथ मल्टी डेवलपमेंट बैंक को आगे आने की जरूरत पड़ेगी। So this was a report which was published on the second volume of the G20 panel. It was suggesting shift from the project-based approach in the country. Now some basic details that is coming out of with this report, जो आपके मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा relevant हैं, specifically in General Studies paper 3. The second volume of the report, they have highlighted कि जो multi development bank है, the MDB, you can also write in short form. एक जगह अगर आपने full form लिख लिया तो बाद में आप short form use कर पाएंगे। That have recommended that the multi-development banks should focus on country building and operationalizing the country's platform. So जो Indianization platforms हैं, जो rules and regulations हैं, उसमें adhere करने की जरूरत है। The G20 expert panel has also advocated कि multi-development bank को अपने जो national-led development है, जिस country में भी वो काम कर रहे हैं, so country-led development should be there. Suppose specifically if they are working for India, so they should specifically focused on the development of the country, or they are working for Japan. So industry led, country led development को भी ध्यान देने की जरूरत है long term transformations में, right? And the expert group has called for bringing the private sector engagement. So there can be the triple P, that is a public private partnership which can go on with the multi development operations, and recently raising the MDB financing issues as well. Now, कुछ important recommendations दी है पैनल ने। They have said that the multinational bank which is there, जो multinational bank actual में operate कर रही है, so they need to come with the shrink with the development of the priorities of a country on the country which they are doing, और co-create कर सकते हैं multi-year program के साथ, bring private sector engagement, significantly raise the MDB financing and achieve how to reach this goal. So target, how to achieve the target, that is again an important point. And this should be done in coordinations with the country concerned and their policy making organizations. Now, multi development bank as a definitions की बात करें, क्या होते हैं multi development bank? This is a pretty basic concept. जितने भी financial institutions हैं जो कि खास करके country development, country led development की बात करें, they are more into financing part, right? तो financing में involve है। These institutions progress for the economic growth, reduce poverty, improve the part of standard of living of the recipient country. तो कौन कौन से organizations हैं? If I name some of the organization, first we have Asian Development Bank, right? Then we have African Development Bank, we have Inter-America Development Bank, even World Bank। ये कुछ और important institutions हैं जो कि multi bank के categories में आते हैं, and they play a very crucial role in supporting the infrastructure, social program and sustainable development initiatives. Industrial growth hits in August. This is the 14th month में ये अभी तक की सबसे highest growth witness की गई है। The data was released by the MOSPI, that is the Ministry of Program and Statistical Implementations, and they have said that the growth was witnessed by 10.3% for August 2023, which is pretty higher number compared to even the anticipation. जो actual में anticipations थी उससे भी number काफ़ी ज़्यादा high. Now, upward growth trend देखी गई है IAP के productions में पिछले 14 महीनों में. The estimate was of 9.1% and actually we have achieved the target of 10.3%, right? तो ये actual target है, 9.1 and 10.3 is the actual progress that we have made. Industrial growth has come down to 5.7, जो गिरावट देखी गई थी उसमें
5.7% तक की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है टिल जुलाई, राइट। एंड इन अगस्त इट वाज सपोर्टेड टू इम्प्रूव, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की अगर बात करें, द सेक्टर्स विच हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड इज माइनिंग, दिस इज द फर्स्ट सेक्टर. The second sector that has improved is manufacturing, right? तो manufacturing, and third is electricity, right? तो ये कुछ important sectors हैं जिन्होंने अच्छी performance दी है इस growth. Now I'll tell you the growth wise, I mean the sector wise जो growth है. First primary goods की अगर बात करें, in primary goods the overall growth that was witnessed was around 12.4%, capital goods में 12.6, intermediate goods में 6.5%. These are the comparison for 2000, I mean for the July, right? Infrastructure goods में 14.9, this is among the highest. So infrastructure has performed commendably well. Consumer durable 5.7 और consumer non durable में 9.0. Export demand की अगर बात करें for the month of August, it has also seen an upward trend with petroleum, machinery, equipment and textile and the pharmaceutical sectors. Moving ahead with the editorial for the day, all are parliamentarian, right? This is written by Ashwadan, who is a former deputy chairman of the Rajya Sabha. And this particular session is ongoing from 12th of October till 14th in New Delhi. पार्लियामेंट के साथ साथ जो नई कन्वेंशन सेंटर बनी है यशोध्यम, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं. एंड द थिंग्स आर पुटिंग इन प्लेस, P20 G20 की एक पार्ट है. So we'll see how the parliament convention and this particular forum will definitely help to overcome the part of the democratic challenges and the legislative processes. So what I'll be discussing first, we'll see the high level of the sessions which will be there, focus on the P20 summit और G20 और उसके सक्सेस के बारे में भी समझेंगे. So India is going to hold, which is actually started. The part of the thing has started from 12th October onwards, right? G20 के जो speakers होंगे, जो countries, member countries है, वो participate करेंगे. P20 since its inception in Canada, first started in 2010 in Canada. So this is again an important statement for many other government examination. और इसकी अगर बात करें साइंटिफिकेशंस की, it has represent become a socially accepted and legal tangible forum to discuss the important issues. The meeting was held across, provided with the unique opportunities spreading a share across the country with community diversity and the part of the community-led development in the transformation. So this is how it has come to an overall improvement in the overall legislative process across the globe. Now high level sessions में कुछ important चीज़ों को discuss करनी है. 4 ऐसे important agenda हैं जिनको prioritize की गई है. First is the Agenda 2034 SDG, that is the Sustainable Development Goal, that will showcase the achievement, accelerate and progress. The second is energy transition, right? And अगर energy transitions की बात करें, this will be the gateway for green future. The third is the mainstream of gender equality, women empowerment की बात की गई है और women led development की बात की गई है. Specifically अगर Indian context में देखें, the 1/3 of the reservation which is provided through 128th Constitutional Amendment Act, this is also very important, जहाँ पे women reservation की बात इंडिया में की गई है. Transformations of the people life through public digital platform, जहाँ पे digital stacks के through इंडिया ने काफ़ी हद तक progress की है. And this session will come together with G20 members जो guest होंगे, how the parliamentarian can advance, और important चीज़ों की discussion होंगी in the context of the parliament developments. Now focus क्या है P20 की? As I've told you कि main themes जो हैं वो highlight किए गए. These are the part of the sessions where the actual focus is. Now the focus of other points will be there on the Life is Beautiful with initiatives with the pre-summits event. और इस initiatives में pro planet जो people P3 approach है उसको adopt करने की कोशिश की जाएगी सारे G20 member country के साथ. And it will seeks to leverage the practice to build an ecosystem to reduce, reuse and recycle, जिसे R3 भी कहते हैं या 3R भी आप कह सकते हैं. The theme for P20 is One Earth, One Family, One Future that embodies the spirit of unity, collaborations and shared destiny. Now G20 और उसकी सक्सेस की अगर बात करें, recently concluded G20 where India was the chair और ये continued है इंडिया के प्रेसिडेंशियल till November 2023, right? सो इस बार के चीज़ों में काफ़ी हद तक प्रोग्रेस देखी गई विद आवर हेरिटेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन वाज इक्वली फोरकास्टेड और इसने एक इंटरनेशनल इकोनॉमी को री एनर्जाइज करने की कोशिश की बिकॉज पोस्ट कोविड, अगर पोस्ट कोविड की बात करें, ये एक बहुत बड़ी मीटिंग रही है G20 मेंबर्स के बीच में.
the availability of greater resources, development, expansion of tourism, global workspace, stronger food, and the part of millet productions, क्योंकि international year of millet, right? International year of millet was also there, which was there, and the procurement for G20 benefit for the entire nation. Every G20 membership which is there and the forum which is there is an equally फोरम जहाँ पे हर एक मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि नए इनोवेशंस के साथ दे शुड बी कमिंग अप, और एक यूनानिमस डिसीजन बनाई जाती है पॉलिसी मेकिंग को लेकर के, राइट. सो दिस टाइम वेयर इंडिया हैज एक्चुअली हेडेड अ लॉट ऑफ अदर एरिया विद देयर बायोफ्यूल अलायंसेस की अगर बात करें, इंडिया यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो ट्रेड डील फाइनल हुई है, दीज आर सम ऑफ द माइलस्टोन प्रोग्रेस दैट इंडिया हैज एक्चुअली अचीव इन दिस कंटेक्स्ट. So the progress definitely is something that has to be talked about. Now आंसर डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. जो कल के सवाल हैं उसको मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बताऊंगा. गो विद द डिस्कशंस. सो फर्स्ट द करेक्ट ऑप्शन इज सी, थर्मोप्लास्टिक पैरामीटर पॉलिएस्टर फैमिली से बिलोंग करती है और पीईटी ग्रेडिंग एंजाइम्स हैं, आई मीन समथिंग विच इज दैट. तो फर्स्ट का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट, third is also correct, it's lightweight contributing to the various packaging material, and fourth statement is also correct, it's a chemical resistant suitable for storing and other products. Now for second question the correct option is B, जहाँ पे पहली statement incorrect है, that is restricted to the insolation and scattering in Nepal, Assam and the northern area. It is now extended to both Bangladesh and Pakistan. Second statement is correct, it eats on the wetland and the herbaceous plant which is commonly to the बेसिकली डियर नेचुरल हैबिटेट. तो स्वाम्पी डियर्स के बारे में सवाल पूछे गए थे. डू चेकआउट आप में से किन लोगों ने करेक्ट ऑप्शंस मार्क किए. मूविंग टुडेज एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ द डे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द क्वांटम डॉट्स. इस तरह के सवाल प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हैं. क्वांटम डॉट्स एग्जिबिट द साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकली इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज. लार्ज क्यूडीज emit blue light and quantum dots have a higher fluorescence quantum yields. तो आपको ऑप्शन चूज करने हैं whether A is correct, whether B is correct, whether C is correct और D is correct, और आप अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं. The second question of the day is about the Hunuk Lake. It's a glacial marine dam lake. It play a important role in hydrological cycle balance in the Teesta River basin. Again, choose the options. Correct option A, B, C or D, and write that in the comment section down below. Many of you are not participating. I humbly request you to participate and practice a good number of questions so that in the real examination it is easy for you to mark the correct answer. यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे आप, आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी उसकी, and you will be able to recall if something related to this comes in the real examination, right? So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.